Hello everyone and welcome back to another video. This is the last subject strategy that you need to understand before going for your CA final exams. And today in this video, I'm not going to talk about how to prepare for IDT, like which chapter to study, how to study, but what is the most important part you need to study for IDT before you give your CA final exam, because if you are not focusing on that, you will not clear IDT. So focus on the part that I'm going to say in this video, because chapters कैसे पढ़ना है वो सबको पता है, बट किस तरीके से पढ़ना है, क्या चीज पे फोकस करना है आईडीटी एज अ सब्जेक्ट में, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट एंड दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू शेयर यू इन दिस वीडियो. सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो. सी, आईडीटी सिर्फ एक ऐसा सब्जेक्ट है विच लुक्स वेरी इजी, बट दिस इज वन ऑफ द टफेस्ट सब्जेक्ट दैट इज देयर इन ग्रुप 2. सी, फर्स्ट ऑफ ऑल समझ लो दैट आईडीटी इज नॉट अ क्वेश्चन बैंक टाइप ऑफ अ सब्जेक्ट कि आपने क्वेश्चन अच्छे से कर लिए, यू विल एबल टू क्लियर द एग्जाम. नो, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट्स ऑफ सीए फाइनल एग्जाम. Like, I think the only conceptual subject that is there which you will not be able to clear if you do not have good conceptual understanding is IDT. अगर आपको इसमें कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, आप फेल होने वाले गारंटी है. आप क्वेश्चंस पढ़ के क्वेश्चंस करके रट्टा मार के नहीं जा पाओ. ठीक है. सो देयर आर सम मिथ्स दैट आई वांट टू स्टार्ट विद एंड यू शुड रिमेंबर दिस, then only you will be able to have a good start in IDT. Okay, first of all, this is the easiest of all the subjects. No, it is not the easiest. Any subject which is there in CA final has some sort of difficulty, and in this subject the difficulty is conceptual understanding. Okay, so this is not the easiest. Secondly, मैं क्वेश्चन सॉल्व करके जाऊंगा, मैं क्लियर हो जाऊंगा, नहीं होने वाले भाई, फेल होने वाले. Jan 26, May 26, if you see, the pattern has drastically changed, and if you only go by question solving, you will not be able to clear it. Okay, and yes, it is a manageable subject, but not only with questions. How to manage it, I will tell you in this video. But first of all, ये मैं मानता हूँ that for if you compare DT, if you compare FR, those are vast subject that is not, you are not able to complete 100%. But in IDT you will not find that issue. You will be able to complete 100% even in the 1.5 days. So ऐसा नहीं है कि आप पूरा complete नहीं कर सकते, but completion is not the target of IDT. In IDT the target is you have to have a good understanding of how the things work. नहीं समझ में आएगा, क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर पाओ. ठीक है. सो नाउ व्हाट इज योर फर्स्ट रिवीजन स्ट्रेटजी? हाउ टू स्टडी सब्जेक्ट्स आई विल टेल यू, बट उस पे ज्यादा फोकस मत करो. द टू क्वेश्चंस दैट यू हैव टू आस्क इन द फर्स्ट रिवीजन एंड यू हैव टू रिमेंबर ड्यूरिंग योर फर्स्ट रिवीजन इज दिस. ए, हैव अ गुड कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग. Okay, this thing you have to focus on in your first revision. And secondly, every question that you solve, ask how is it supply, what will be charged, like CGST, SGST, IGST, what is the place of supply. Like if you understand the place of supply, then you will be able to understand what to apply, CGST, SGST or IGST. What is the time of supply? All these things you have to ask during your question. ऐसा नहीं क्वेश्चन पढ़ लिया, आंसर सॉल्व कर लिया, हो गया, नहीं होने वाला भाई, नहीं होगे क्लियर. अगर इफ यू हैव नो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, यू विल फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट इन योर एग्जाम टू आइडेंटिफाई कि क्या है क्या नहीं है. See, in my exam, even when I was doing my preparation, I felt that this is the most demanding subject when you ask for conceptual understanding. This is the only subject where you need to have a very good conceptual understanding. What is place of supply? कब place of supply होगा? When to charge RCM? When not to charge RCM? What is exempt? What is not exempt? What is the place of supply time? Every chapter is connected to one thing of your 14 mark question. Like every chapter you will find that कि ये अगर concept miss हो गया, आपका वो question ही solve नहीं होगा, वो point ही नहीं solve होगा. So that is the reason you need to focus on these two things. A, you have to have a good conceptual understanding. B, you have to ask in every question that is there, what is this, how is it supply, how is it not supply. Foreign वाले हैं वो भी आपको याद रखना पड़ेगा. So in GST part, this is the most important thing कि आप ये सब questions पूछते रहो. अगर आप ये सब क्वेश्चंस पूछते रहोगे और समझते रहोगे why it is this and why it is not that, then you will be able to solve each and every question. Now once you do the GST part, like पहले की 7-8 chapter till ITC, including exports and imports, everything that is there, you have to go to customs. Don't start with theory. I will tell you why to not start with theory, because there is something. So customs, like this is the most demanding thing, like demanding for your time, energy, everything, your mind as well. But customs, it is not required that much. You have to just solve questions, और बहुत easy questions है. There is only one chapter, valuation chapter, as well as the baggage part of the subject which you have to focus on. बाकी सब subject में दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, concept दिया है, question solve हो जाएगी. ठीक है. Then you start with the theory chapters, theory part, that is the demand, that is appeals and revisions and all those chapters which are there. वो important chunk है. Do not skip that. Offenses and penalties, वो बहुत important. The theory chapters are the most ignored one, but these are the most scoring. अगर आपने थियोरी अच्छे से रट ली ना, आपके 30-40 मार्क्स तो ऐसे कहीं नहीं गए. You will find good amount of questions from theory part,
and good practical questions from the theory part. So you have to definitely focus on those 7-8 chapters that are there. And if you are focusing on the theory part very well, your 20 to 30 marks are nowhere gone. 20 marks of customs, you will be able to clear your CA final IDT. But to get an exemption in IDT, this is the most important. 14 मार्क्स का आईटीसी आएगा, 14 फिर 8-10 मार्क का आपका एग्जामिशन में से आ जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई में से आ जाएगा, सब मिला के आपका 40 to 50 मार्क्स यू विल गेट फ्रॉम दिस पार्ट. एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू दीज टू क्वेश्चंस यू हैव टू ऑलवेज आस्क ड्यूरिंग योर फर्स्ट रिवीजन, सेकंड रिवीजन, थर्ड रिवीजन. Every time you solve a IDT question, you have to focus on these two concepts. Now, once you do everything, you have to give mocks. You have to try to test as much as you can. What I mean by this is that every question that you do, this is the only place where I will tell you that 3 घंटे से ज्यादा 3.5 हो गया ना चलेगा, पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करो आईडीटी को, चाहे वो 3.5 घंटे में हो. फर्स्ट मॉक दैट यू गिव, you have to try to complete everything. And maybe you get like take 15-20 minutes extra, but you have to complete everything because you have to test every concept that is there. वो क्वेश्चन पेपर में जो भी आया हो सब कुछ सॉल्व करो. 3 घंटे में नहीं हुआ, आधा घंटा ज्यादा लोग कर लो, but every concept you have to test yourself, every question you have to do. Then only you will be understanding कि मेरे को कितनी conceptual understanding है, whether I am able to solve the entire paper in a very good manner. ठीक है. And the most important part is the 14 mark का question. Okay, if you are able to navigate it, 10 से 12 मार्क्स इसमें आ गए, देन तो आराम से आपको एग्जामिशन आ जाएगी. Yeah. Now, for the second and third revision, there is nothing much that you need to add. Just you have to add the RTPs and MTPs, and I will tell you that you have to solve it on your own. First try, you have to give it on your own. Like November, May, and especially if you are able to do it, then Jan 26. November, May के तो definitely खुद ही करो. At least question number 14 वाला, sorry, 14 मार्क का जो क्वेश्चन है वो तो पूरा का पूरा आपको ही करना है. Try to solve it, like whether it will be added or not added, or whether CGST, SGST और IGST will apply. इतना अगर आप समझ पा रहे हो उस क्वेश्चन को सॉल्व करके, then definitely you will be able to get good marks. And now you have to add MCQs, which are, there is a proper video made by Siddesh Walimbe sir, one of the most underrated and a gem of a faculty. अगर आपने IDT अभी तक नहीं लिया है, and if you are watching this video, please go with Siddesh Walimbe sir. Like आंख बंद करके चले जाओ, you will find it that good. Okay, now MCQs कर लिए, and he has made a 200 plus shorts का video, so you can go start that like video देखना third revision and in the last revision, like in the 1.5 day. So for the third revision you have to add this 200 plus shorts video. You will find many good concepts that are there, and बहुत minute चीजें हैं, जो चीजें आप पूरा पढ़ने के बाद में भूल जाओगे, वो चीजें इसमें कवर्ड है. So take the print out of the entire PDF and like have a good, like give a good amount of time to 200 plus shorts. ओके, दिस इज अ यूट्यूब वीडियो, सो आप 2 घंटे में 1x 2x में देख के वैसा मत करना, 1.5x में देखो, लेकिन अच्छे से समझ के करो. ठीक है. देन सेकंड रिवीजन के बाद में यू गिव मॉक्स, बट सी दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट एंड दिस इज द एंटायर सारांश ऑफ दिस वीडियो, द समरी और द learning that you need to take away from this revision strategy is, if you are not able to think or find the answers, like if you are not able to understand कि इसमें place of supply है, supply है, RCM है, लगेगा नहीं लगेगा, if you are not able to navigate that, you have a concept problem and you will definitely fail. ये मेरे से लिख के ले लो कि अगर आपको concept नहीं समझ में आ रहे, fail नहीं होंगे तो भी आपको 40, 45, 50 मार्क्स ही आएंगे. If you want exemption, you need to have a good conceptual understanding. See, in my attempt, one of the toughest paper that was there was IDT. I still scored 55 marks. And yes, वहां पे मेरे कुछ marks रह गए. Like still I scored around exemption. My conceptual understanding was not great. That is the reason I got 55. I accepted. That is the reason I am telling you. In order to get exemption in IDT, plus the changing pattern that is there, you have to have a good conceptual understanding. This looks easy subject, but it is not an easy subject. Don't take it lightly. इसमें ही आपका सबसे ज्यादा amount of time जाना चाहिए. बाकी सब में there is a pattern, there is some conceptual understanding required, but question practice करोगे तो हो जाएगा. But in this subject वो नहीं होगा. अगर आपने क्वेश्चंस कम प्रैक्टिस किए लेकिन आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है ना, यू विल एबल टू क्लियर दिस और गेट अ गुड मार्क्स और एग्जामिशन भी आ जाएगी. बट अदर सब्जेक्ट की तरह नहीं है कि भाई क्वेश्चंस कर लिया और पास हो जाओगे, नहीं होगा. ठीक है. सो दिस वाज द एंटायर वीडियो. द स्ट्रेटजी फॉर ईच चैप्टर यू डू नॉट नीड टू हैव दैट, बट द ओनली थिंग आई वुड ऐड इन दिस कि इफ यू हैव टाइम, मेक अ समरी चार्ट आई एम सेइंग, नॉट नोट्स. ओके, समरी चार्ट फॉर द जीएसटी पार्ट, लाइक कनेक्ट एवरी चैप्टर. ये 2 चार्ट बनाओ. आई मेड इट, आई कैन शो यू. बहुत बड़ा चार्ट लो, पूरे जीएसटी को वो 2 चार्ट में कंप्लीट कर लो. यू विल फाइंड इट वेरी कनेक्टिंग और समझ आएगी ओके हाँ ये है, ये नहीं, ये नहीं. बट अगर आप नहीं बना पा रहे हो, देयर इज अ 90 पेजर बुक बाय विशाल भत्तड़ सर. ओके,
वो परचेस करो, लाइक दैट इज वेरी गुड। और आपका जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो 90 पेजेस में आ जाता है एंड यू विल फाइंड इट वेरी इजी टू कंप्लीट एंटायर आईडीटी, बिकॉज एवरी कॉन्सेप्ट इज इंटररिलेटेड। इतनी सी बुक में आपका सब कुछ कनेक्टेड है, सो यू विल फाइंड इट वेरी इजी। सो फर्स्ट आई विल से कि आप एक समरी चार्ट बना ही दो, at least for the GST part, not for the customs and theory part, it is fine. But if you are not able to do it, then go with the 90-pager book. You will find it very easy to complete it. So these are the things that I would say that are necessary. Yes, some upper niche wale points I will definitely make a video where there is some smartness that is required in IDT and other subjects as well. Uske related I will make a video. But if you are doing for the first revision, second revision, proper एक strategy है, वो यही strategy. Okay, so thank you so much for watching this video. If you have not subscribed to this channel, do subscribe it. There are many videos that are going to come relating to your exam, so you need to be aware of it. And also टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। ये जो नोट्स मैंने बनाए हैं दैट विल बी देयर इन द टेलीग्राम चैनल। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स हु आर गोइंग टू गिव देयर एग्जाम इन November 26, and I will see you in the next video. Till then, take care and bye bye.